क्यों लोग कहते हैं कि मेरीन तो काम ही नहीं कर रही? देखिए लोग तो कब्बे को सफेद भी बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ? लोग वासे को चौधरी भी बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? When you go on set, you go there to work. You know, when people are arriving late or they're misbehaving or they're being a certain way, it did bother me. Maybe uski wajah se people thought I was very snooty or whatever. I was very quiet and I was very muँह फट. I still am very मुँह फट. Because यहाँ है ना, यहाँ होना चाहिए. एक चीज़ मैं अपने बेटे को सिखाना चाहूँगी. यही जो मैंने अभी इतना लंबा फलसफा छोड़ा है, यही सिखाना चाहूँगी और क्या. मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं कर. एक अपनी आदत जो मुझे ज़हर लगती है. मैं बहुत बोलती हूँ. नहीं, हमने तो नोट ही नहीं किया. As a wife. 11. Oh no! तो ना आजकल आप बड़ी सुशी बना रही हैं. सुशी कौन खाएगा? सुशी कौन खाएगा? सरमद, खुसट. सर मैं सुशट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेहरीन राहील मुनीर और आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी अहमद अली भट्ट के साथ. Assalamu ख़वातीन व हज़रात, this is Ahmed Ali Bhatt with yet another episode of Excuse Me. मैं अवॉइड करता हूँ उन लोगों को इस शो पे बुलाना जिन्होंने मुझे बरसों से देखा है और जानते हैं, बिकॉज आप उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते. उनके पास आपकी ऐसी ऐसी हरकतों और कहानियाँ होती हैं, वो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं. तो इस तरह के एक आज हमारे मेहमान हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लाहौर शहर में अगर आप रहते हैं तो आप इनकी फैमिली को अगर ना जानें तो आपकी बदकिस्मती है. शी इज़ हेलिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव फैमिलीज ऑफ लाहौर. नॉट ओनली दैट, शी मेड अ नेम ऑन हर ओन इन एक्टिंग, in self-business woman, from cooking to education to human rights to working for children with special needs. And apart from that, she's a freak in gym, because जिस तरह वो gym करती हैं, she puts a lot of men to shame, and that too on a regular basis. But apart from that, she is one of the most beautiful souls that I've come across. She's a fantastic sister. She's an amazing mother, and she's a very old friend जो कि बहुत कम टाइम आपके साथ स्पेंड करती हैं, because now all her time goes to her children and family. Please welcome the very talented, जो कि अभी still working, by the way, Mehreen Raheel. Wow, I'm overwhelmed. What an introduction, Bajji. Thank you. Bajji. Bajji, मैंने कहा वो बोले Bajji. Bajji. सबसे पहले ये तो परसेप्शन दूर करें ना, you're not retired. Does it look like I'm retired? नहीं तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि मेहरीन तो काम ही नहीं कर रही? देखिए लोग तो कब्बे को सफेद भी बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ? लोग वासे को चौधरी भी बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? वो मारेगा मुझे, वो उठा के ना ईंट मारेगा. I meet him in the gym every day. उसे कहता तुमने क्या कहा है ये? Fair. But why the certain gap? Well, come to think of it, I might as well talk about it. You see, motherhood is a very powerful tool Allah has given every woman. Yes. और होता ये कि कुछ माओं का वक्त ज़्यादा चाहिए होता है बच्चों को, especially children who are differently abled. My daughter is on the spectrum, so for me to feel comfortable leaving her on not her own but with an attendant or with somebody in school or something, I had to feel confident that she would be able to move ahead on her own without me being back in the back seat. So जब मुझे ये लगा कि वो independent हो गई है, वो खुद चीज़ें कर सकती है, then I decided to step back in the game and carry on from not where I'd left but somewhere. And abhi bhi, the thing is that my priority, because what happened was that I started working really early in my life. Because I was about all of 12 and I had seen so much in my life that I came to a point where I wanted to enjoy my children. Being a mother was the most wonderful things that could have ever happened to me. So I wanted कि इसको ना फास्ट फॉरवर्ड में नहीं करेंगे, इसको ना मज़े लेके आराम से. मैंने अपने बच्चों को एक एक चीज़ उनकी खुद देखी, खुद पाला, and I'm very, very attached to them. And why not? Alhamdulillah, why not? Yeah, why not? And you have a perfect partner also. Alhamdulillah, he's a wonderful man. बोलता कम है बेचारा, मगर चलो. अच्छा, the best of them do. They know what's good for them.
Let's talk about childhood. Bhai, you grew up all over Pakistan. You guys were constantly moving. My father was in the army. I was born in Kharia. And क्या I खूबसूरत was जगह born है in यार. Kharia. All the खारियां, cantonment कैंट, there. क्या बिल्कुल. बात है. और उसके बाद फिर बहावलपुर, बहावल नगर, and then eventually Multan, then Lahore, then Kanganpur, then Lahore. Kanganpur also. Kanganpur. My father switched from the army to the Rangers, and he had a post over there. And आपको याद है कि जब floods आया करते थे, जैसा आते हैं, he was part of the rescue mission. Okay. And I remember he's helped so many people. He's my hero actually. Oh. So unki post thi Kanganpur mein, and we used to go and spend, my brother and I, we used to go and spend a lot of time over there. And मुझे वहाँ पर दो चीज़ें याद हैं, एक ट्यूबवेल और अमरूद के दरख्त. और दानियाल को कव्वे ने मारा था क्योंकि मैंने उसको कहा था कि दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़े और उस पे कव्वा रहता था. And he will never let me live that one down. हाय बेचारा कौवा पै गया ना. मगर growing up as free and as exploring Pakistan, वो childhood का effect, do you think that had a lot to do with you being a creative soul that you are? Time बहुत different थे. It was a lot safer for children to step out. I remember my father was posted on the Wagah border. एक घर था और मैं और मेरा भाई सारा दिन हम लोग बाहर पहलियों में, जैसे कहते हैं ना पंजाबी, पहलियों में खेला करते थे. हम लोग गोंगलू को सेब की तरह खाते थे. गोंगलू आप लोग जानते हैं क्या होता है? टर्निप को कहते हैं, अगर शलजम को कहते हैं. We used to walk back and forth from the border. किसी ने कुछ नहीं कहा. जो हमारे हमसाए ममालिक वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत इज्जत से हमारे इंडिया कह सकती हैं. इंडिया कैसे इंडिया कह सकते थे. इंडिया ट्यूब पे. I didn't. Well, you have to be careful nowadays what you say, right? So they were very welcoming. Yeah. कोई हॉस्टैलिटी नहीं थी, कोई कड़वापन नहीं था. और मेरे वालिद साहब जहाँ गए हैं, उन्होंने एक चीज़ हमेशा I've seen, उनको लोगों ने बहुत इज्जत दी है. सो हम जहाँ भी जाया करते थे, कहते जी मेजर साहब के बच्चे आए, मेजर साहब के बच्चे हैं. पलकों पे बिठा के लोगों ने लिटरली रखा है. एंड वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द, कहते हैं ना कि ये जवानों के मेस जो होते हैं, लंगर जो होते हैं, वहाँ पर थड़े पे बैठ के रोटी खानी. दैट इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी, बाय द माई culinary journey. गरम गरम उनका सालन स्टील की प्लेटों में खाना. द स्मेल ऑफ दैट ब्यूटिफुल रोटी दैट्स कमिंग आउट ऑफ द तंदूर. एंड देन जब हम लोग मेहमानों के लिए छोटी समोसियाँ बना करती थी. My brother and I would go through them like nobody's business. The best I've ever had in my life. So that was my childhood, you can say. You're very close to Danny. He's your partner in crime. He's always been there for you. He's my younger brother, yes. Are you, मतलब obviously बात है, being a younger brother, एक वो माँ वाली ममता और Very much so. protectiveness. I've been very, very, very protective about him. ममता का ये है कि I was very mothering towards him. And sometimes I think it's a little overbearing for boys. You know कि उसके दोस्त आए होते थे, सारा वो सर के ऊपर में चढ़ी होती थी. They would be like, पर ये वो थोड़ा सा, give me some space. He was a cool one. I don't know, I was a creative one, or you could name me better. But he was a cool one who had cool friends, who did cool things. I always found you very restless. You still are. You could say that. Well, full of beans. Yes. Full of constantly, like even back in the days, you were always मतलब on the move. On the move, and हमें ये भी याद था क्योंकि हमारा तो खैर मी एंड वासे एंड ऑल दैट, हम लोग जब देखते थे कि छे यार मेहरीन राहील वो ड्रामा कर रही है, वो ले हुनैड हो रही है, हुनैया हो रही है. You started very early and you became this name that Mehreen Raheel is there. You know that? I decided I want to just do things in my life. I was the most fearless when I was a teenager. And I think my faith had something to do with it, because I always believed in seizing opportunities, and I always believed in consequence. And I always believed in making hay while the sun shines. इतने बड़े-बड़े मैं मुहावरात यूज़ कर रही हूँ. कभी भी मैंने opportunity को जाने नहीं दिया. And because I felt that I needed to do something. और जो चली गई उसका कभी हम नहीं किया. But उसका effect होता होगा, I'm sure. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. You don't because I have no regrets. If you think of it that way, all the good, the bad, I have no regrets in my life. Alhamdulillah. Everything
taught me something or the other. It made me better. It made me understand things better, become a better human being. Even my mistakes made me realize what I wanted and what I didn't want. But you always learn from your mistakes, na? There you go. मतलब I know I have a lot of regrets. मगर फिर अगर मुझे कोई कहे कि जी आप इस चीज को फिर से करेंगे, and I was like, no, I'll mostly do it the same way. I would do it the same way too. Exactly. But do you think it was easy for us with the मतलब you If you talk about growing? if you tell my 16-year-old Mehreen, or if you tell a 21-year-old Mehreen, I couldn't have a conversation with a 16-year-old Mehreen. She was very pompous. I was very pompous. She was very full of I herself. was very full of myself. Yeah. I think over time, my daughter has taught me a lot of patience, which I never had. I was always in a hurry. Your mother said the same thing. I was always, there you go. ठहराव आ गया है. Becoming a mother has made me a better human being. It's made me forgiving. It's made me respectful towards every kind of creature that's out there. That's what motherhood does to you, you know. It teaches you to accept everything. The good, the bad, people the way they are, without judging them, because you don't know where they're coming from, what troubles they've had, what's going on in their lives. बैठ के हम 2 मिनट में कहते हैं ना फला ऐसा है, फला ऐसा है. उसकी कहानी तो सुनो, उसको देखो तो सही वो आया कहाँ से, उसने किया क्या है जिंदगी में. And then sit and make a comment about them. But then again, who are you to comment about them? Do you agree with me? Yeah, I know. I know what you mean. But हमारे यहाँ तो अब एक वो बन गया ना कि everybody needs to make a comment. So let them make a comment then. कान क्यों दो होते हैं, एक से सुना दूसरे से निकाल दिया. But some level to it gets. Do you think कि your past catches up to you? मतलब कि जो आपने I feel what कि जिंदगी में जो आप करते हैं ना, उसका सिला आपको जरूर मिलता है. आपने अगर बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा. अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा. Negativity and positivity is definitely there. Yeah. Past catches up to you इस तरह है कि अगर आपने जिंदगी में कमीनियां की हैं, then you are going to pay for them. It's going to come up somewhere or the other. Yeah. And you should be prepared for it. I've made mistakes in my life and they have caught up and I have paid for it. But I've moved on then. Right? मतलब कि I haven't fought it. I haven't fought anything negative in my life. जो आया, आ गया, बस कर लिया. Move on. Fame got to you at a very early age because having so much attention और इतना ज़्यादा मतलब खैर अब तो एक है ना कि भाई mediocrity हमारा एक नया स्टैंडर्ड. सोशल मीडिया तो था ही नहीं ना इस जमाने में. वही ना, अब तो हमने देखें, अब हमने शॉक वैल्यू को एंटरटेनमेंट बना दिया. बट यू केम एट अ टाइम एंड योर शॉट टू फेम वाज कि भाई एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई अच्छा शी इज मेड इट बिग, शी इज एवरीवेयर, बड़ी फिल्में, एड्स, ये वो दिस एंड दैट. इट हैज टू गेट टू यू. माय नानो यूज्ड टू से अल्लाह जन्नत नसीब करे कि भाई It did get to me. Yeah. It did get to me. फेम रब्बी नशा है, ये रब के लिए बना है, इंसान से हैंडल नहीं होता. नहीं होता है, हैंडल नहीं होता है. It took away a lot of my time with the people that I loved. Because I had become a machine. I was working, I was living the dream. I was traveling the world, I was doing everything. Now that I look at it, it was one of the most amazing things in my life. But उसमें सिर्फ मेरे लिए वक्त था, मुझे अपने लिए वक्त, मतलब कि it was just about me. It wasn't about anybody else. Maybe my parents, yes, because my parents have always been the nucleus of my life, the center of my life. They are the people जिनकी वजह से मैं कन्नी खाते खाते गिरते गिरते बच जाती थी भी. लेकिन बाकी रिश्तेदारों के लिए अब मैं जिनको जिस तरह के मेरे चचा, मेरे अपने कजिन, सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं था. Never just, कहते हैं ना कि रुक के पूछना कैसे हैं, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में. Did it make you proud also? Like I was never proud. I was never proud of myself. I might have looked it, I might have seemed it, but my Allah kept me grounded, very grounded. Because I never speak of the goodness that I do for people or whatever do I, because नेकी कर दरिया में डाल. लोगों को एक perception होती थी फला ऐसी है तो ऐसी है, लोग बहुत बोलते थे, because I was very focused. मेरा time and मेरे money, because the thing is like, when you go on set, you go there to work. You don't go there to do different things. When people are arriving late or they're misbehaving or they're being a certain way, it did bother me because I wasn't thinking like them. I was thinking myself. I was very focused. I want to do things. That was very annoying. So
maybe उसकी वजह से people thought I was very snooty or whatever. I was very quiet. Yeah, I was very quiet and I was very muँह फट. I still am very मुँह फट. Because जो जहाँ है ना, वो यहाँ होना चाहिए. जो दिल में आप फील कर रहे होते हैं ना, लोगों की गीबत नहीं करनी चाहिए, उनके मुंह पे बोल देना चाहिए. लाहौर से जाके फिर कराची में काम करना एंड उस टाइम पे लाहौर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस हो रही होती थी. बट यू वेंट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री आल्सो एंड It's a very weird, कहते हैं ना, unusual journey, you could say. I did photography still shoots पहले जो होते थे for brands and different things. Then I did commercials. I was a commercial queen at one point, I remember. Not preening, but the actual fact. Flex. Alhamdulillah. No, sorry. फिर उसके बाद I wasn't wanting to do a lot of drama. स्क्रिप्ट वगैरह उस वक्त कोई अच्छी नहीं आ रही थी. मैंने सीधा डाइव मारी फिल्म की तरफ, वो भी पंजाबी. उसके बाद फिर सुल्ताना आपा got in touch with me and I did the best work of my life, दास्तान. And then I did जिंदगी गुलजार then also. Zindagi Gulzar hai, then Mastana Mahi, then so on and so forth. Then there was no stopping. And then I loved what was coming my way. Because people thought for the longest time that I can't act. And I don't think, I think I couldn't. Because when you're a model, it's something different. When you're an actor, अंदर से ना आपकी fire निकलती है. I think television was your true calling because True calling. film wasn't, मतलब I think वो वाले एक तो पंजाबी element था और ऊपर से वो film भी हालांकि गाना hit हो गया था. लेकिन do you think मतलब were you The ready for the content film? was not that great at all. I did it for the experience. I did it because I wanted to do a film. I wanted to do something which was completely different. Because you see, the thing is that Indian mainstream cinema, उस वक्त Pakistani actors weren't doing. And I was offered a cultural thing, a Punjabi thing, because wahan se you had Arya, from here Yeah. you had me. It was kind of safe, you could say. And then I did it just for the experience and because I wanted to do it. Not because I wanted it to be a super hit ya kuch aisa vaisa. Just the experience. And to see myself on big screen, to shoot it the way it was shot, everything. It was Just an unbelievable. experience. Yeah. Yeah. But when you saw the film, how was your own reaction? I could have done better. Much better. No, but No, I Gaana mean, the Sitting- thing, nahi, Gaana acha tha, the way the Ganas were shot were nice and stuff, but they were a lot of Masle Masail. masail. Let's just keep it that way. But it goes in like thumbs up because obviously experience is what I'm talking. Are you choosy when it comes to working with production houses? Absolutely. Everybody is. हाँ मुझे होता नहीं कि भाई उसके production house, but you've mostly worked with Hum. I work with a lot of people. I work from Kamar Aftab to Khabar Riaz to you name it. I've done it. But obviously a comfort zone hota hai. You always go back to where you're respected, your time is respected, you're valued. As an actor, you feel comfortable because when your needs are looked after, when you're looked after, when you're treated like an actual human being, then you are able to shine better. एक जो एक्टर होता है उसको उसका फोकस जो होता है वो ये नहीं होता कि मेरी वार्डरोब किधर है तो मेरे मेकअप माला नहीं आया तो लोग टाइम पे नहीं पहुंचे. उसकी फोकस उसका स्क्रिप्ट और उसका कैरेक्टर होता है. Yeah, but हमारे काफ़ी अब नए लॉट में तो काफ़ी ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको बेचारों को खैर वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है. Well, you would know better. I wouldn't know, but thank you for telling me. Good answer. फिटनेस की कहाँ से एकदम आ गई? और I was a person who never went to the gym. Ever. yeah, मतलब But I would hardcore. basically what happened was that started working out after I had my kids. No, I started working out before I had my kids actually. And then I was working out while I was pregnant also. I was going to the gym, I was doing everything. Because ऐसे तो कोई बाहर नहीं निकलती कि नहीं यार मुझे ना मेरी दादी फैट शेम बहुत किया करती थी. You know, एक हमारी फैमिली में खातून थी हमेशा कहती थी कि तुम मोटी हुई तो तुम उसकी तरह लगोगी. और हम सारी बहनें, all my cousins and myself,
जब उसको देखती थी तो हमें याद आता था कि हमने 2 आम नहीं एक ही खाने और पराठा बिल्कुल नहीं खाना। वो बहुत ज़्यादा फैट शेमिंग वो बैठ गई ज़िंदगी में। हमारे हमारे जितने बड़े बूढ़े बड़े थे वो हमेशा कहते हैं, मेरी बिल्कुल। दादी मैंने कहती थी, "ए कम खा, गम खा।" हाँ, सो अल्लाह एनीवे जन्नत नसीब बस करे। फिर वो ऑब्वियसली एंड देन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू हैव टू बी लीन। इफ यू आर प्लेइंग हीरोइन जे ਹੁੰਦੀ है ना ਉਹ भैंस ਤੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। भाई मगर हमारी हीरोइन तो ये ना हाँ, voluptuous। Anyway, so for me, I can tell हर एक की अपनी होती Yeah, है ना, तो मेरा ये था that I have to be a certain way for myself. I have to be obviously to be very comfortable on screen. तो तो बस बहुत हाँ उसके बाद ये हुआ बच्चे पैदा हुए. I had gained my baby weight, then I had to lose that. वो करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक जर्नी शुरू हो गई. And when that journey began, I started enjoying it. Then I started trying calisthenics, I started trying Pilates, I started weight training, I started eating according to that, But- going into different basically spas, trying out infrared saunas, trying out hyperbaric chambers, all of that. Just went crazy because it just felt amazing. It just felt amazing. It's like you have a car, your body is like a car, and you can tweak it up to whatever level you want. And when you tweak it up, you take it out for a ride. But And it do feels you think insane. you're an adrenaline junkie? Junkie तो नहीं कहेंगे आप भाई उसको. इसको पागल बंदा हर रोज नहीं, basically what happens is आपका serotonin level ऊपर होता है. Your happy hormones are there, and so it gets you in a better mood. You're active, you think better, Oh yeah, you're clear-headed. that's true. So वही मैं कह रही हूँ ना, when you take your car out for a drive and you souped it up, it works better, doesn't it? So this car started working way better than it was before, and I was like, whoa, let's not go back then, let's just proceed ahead. So that's my way of answering it. No, but you're doing it amazingly. You've been consecutive with your gym for 10 years? 10 years now. Yes, 10 years. Why didn't you start your fitness line? Matlab, you can easily start your fitness line. I do a lot of food fitness ka, because obviously trial and error experiment. Yeah. Then I do help out brands. I do recipes, by the way. I do recipes for children. I do recipes for children who are differently abled, because जो autism वाले बच्चे होते हैं उनके some of them उनके अंदर aluminum mercury levels बहुत high होते हैं, और उनके लिए ये सारी जितनी preservatives ये चीज़ें जो होती हैं, it's like poison for them. They have to have a balanced diet to function correctly, for their brain function to function correctly. Children have to have a proper diet for them, for their brain to develop in a certain way, for their body to function properly. You're a certified chef now. I mean, you do proper cooking professionally. ये खाने पकाने का वो तो हर एक बहू का शौक होता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल खाना नहीं पकाना था. कच्चा खाना खिलाया मैंने अपने मियाँ को काफी साल, बेचारा चुप करके मुंह बंद करके खा लेता था. Then I decided when I took a sabbatical from work, जब बच्चे बहुत छोटे थे, and I'm talking about 2-3 years के जब वो थे, I said जिंदगी में कुछ करें. And I thought शादी हुई थी बिल्कुल भी नहीं खाना पकाना आता था. थोड़ा बहुत आता तो कुरकुरे याद नहीं है. I think that was the spark. अच्छा. Don't you remember when Yeah, we yeah, did we did that that. program together? Yeah. That's what lit me. Hmm. And literally आग लाई मैनू. And then I ऐसा क्या हुआ? I figured that whoa, I can do this. So and था खाने पकाने का शौक था, but I was never this well informed about food. That's the way to go about it. Then I went to SCAFA. Then I was there. I studied from scratch, from everything. Shahnawaz, one of my teachers, he's one of the most incredible human beings. He literally threw me to the wolves. कहते हैं ना कि बतख साफ करो और फलाने की गोश्त उतारो, छिछड़े अलग करो से लेके how to peel, chop, cut, store, everything he taught me. And he and Sir Rob, he's one of my chefs, head chefs, he taught me. Then I worked there for a bit because I couldn't intern abroad. I wanted to intern in one of the Michelin star restaurants. I couldn't go because I couldn't leave my kids. No, of course. And then I started doing things on my own घर पे. Off and on, किसी की birthday हो गई, किसी का brunch हो गया, कुछ हो गया. Then one day my husband said that we have a hotel in the family. My in-laws have a hotel. They said that, yeah, why don't you turn on the kitchen?
And then I stepped into that line of work about a year ago, and I've learned so much. So that हाँ, because एक professional kitchen चलाना वो everything, how to deal with people, how to deal with their tantrums, the meltdowns, the burning, the electricals, the fridge खराब हो गया है, to पानी आ गया है, to infestations, to everything, food storage, food खाना बचाना, leftovers कैसे use करने, everything. देखें कितना अक्लमंद शौहर है आपका कि उसने कहा एनु इत्थे बिजी कर लो मेरी जान छड्डे Hey. You should ask him that. I wouldn't answer for him. Anyway, so that. And then I cook for my children. There's not a day that goes by where I don't make their food. My routine is usually I wake up in the morning at about 6:37 every day. Or then I go to the gym. After I have a cup of coffee, I go to the gym. I come back. I go straight into the kitchen. I make their lunch and dinner. And then I go to my office and I do my things. जो भी इनका पूरा काम शाम होता है, जो कुछ भी होता है. So, but I basically started cooking for my kids, and that's how I got better. My family. उसमें because I never wanted them to have all these fast food things, these preservatives or इस तरह की चीजें. Wanted to have the earthy, the hearty food, जैसा सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, देसी खुराकें भाई खुराकें होती हैं, because that is what's going to help them in their way. And then जब वो करना शुरू किया तो obviously diet restrictions होती हैं for children who are differently abled, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया. How the blood sugar is affected by what kind of food, what it does, how the brain develops for various children, how you can help it, जो उनकी dietary needs होती हैं, how you can basically what happens is that children who are differently able उनको probiotics की ज़रूरत होती है because they are very high strung people. Or anxiety, the second brain is your gut, right? So anxiety जो होती है, it affects your stomach. So when you're anxious, your stomach is very acidic. And जिसकी वजह से आपका खाना सही digest नहीं होता, पेट में cramps होते हैं, different things होती हैं. So you heal through food in life, be it a normal person or on the spectrum or an athlete or somebody who's wanting to look good. Food is something that makes you and breaks you. So I learned all about that. How to cook, what to cook, how to store, what food affects you. For example, my journey was also about healing foods. For example, kahve jo hum peete hain. Like I make this kahwa for myself every day, which is adrak and long and haldi and nimbu, and I drink like a whole bucket of it every day. And how it helps the metabolism, how it helps your organs, ye sari cheezein. As we get older, you have to look after yourself. So I decided to not fight age, but obviously to be strong enough to look after the family that I have and myself and not be a burden on someone and enjoy what Allah has given me. So food plays a big part in that. आपने भी बात की कि very blunt also and You would know. no yeah how's your political stance nowadays? How do you want it to be? Very diplomatic, very smart, and very mupart, as always. आप excuse me कह सकते हैं अगर आपने नहीं जवाब देना. Excuse me? No, but do you think by being a Pakistani and of course जो politics है वो हर एक को affect करता है. Where do you think we stand? Or where do you think you stand on that front? We are being affected in every way. The whole world is being affected with the current situation of the global wars or whatever is going on. अगर मैं कहूँगी कि कोई चीज़ affect नहीं कर रही, मैं बेवकूफ़ी कर रही होंगी. We need help and we need to respect ourselves. ये मेरा stance है. अल्लाह करे यार हमारा stance and glance दोनों ठीक हो जाएं. Glance ना बिल्कुल ही हम लोग कहते हैं ना कि क्रॉस हेड हो चुके हैं ना, इधर दिखाई देते हैं ना उधर दिखाई देते हैं, बस हम चलते जा रहे हैं. One thing that apart from the million things जो मैंने फादर रोड से सीखी हैं, एक ये भी था कि एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप Education has become a money-making factor. Everybody is out there to just make money. I feel that ये जो all the tech, like I call it, has affected our coming generation majorly. Because everybody is too busy to pay attention
to the now. हम सारा हर वेले फोन पे लगे रहे. Teachers are always connected on the phone. There's so many times where I have caught a teacher sitting there on her phone, not paying. बच्चा बैठा है ऊपर वहाँ पे कीड़े मकोड़े बना रहा है, चीजें कर रहा है. टीचर जो है वो बिल्कुल ही वो तो अपनी वीडियोस बना रही होगी, कर रही होगी कुछ. People are not very serious about teaching. जो कहते थे ना पुराने वक्तों में जो उस्ताद हमारे जो असातिज़ा हाँ, डंडे पड़ते थे भैया मैं. वो नहीं है. और दूसरा ये कि माओं के लिए एक ये मुसीबत खड़ी हो गई that they have to constantly be a helicopter parent, because if they don't keep the kids' grades and their education in check, nobody cares. हाँ, I face that. आई थिंक मैंने ये भी देखा है कि एक तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं लामाफ, वो फियर इंस्टिल करते हैं बहुत ज्यादा. एक एवरीबडी मुझे वो हिस्टीरिया. बल्कि आई वाज टॉकिंग टू योर मदर एंड शी सेड द मोस्ट अमेजिंग थिंग, वो कहती है कि मैं स्कूल से जब आती थी तो पढ़ाई वहीं छोड़ के आती थी. Which is the most wonderful thing. हाँ, और हम लोग बच्चे की 7-8 बजे तक वो बेचारा पढ़ रहा है, उसको ट्यूशनें लग गई हैं, उसको ये लग बिकॉज पढ़ाई नहीं रहे ना, यही तो बात है. अगर आपको सबक स्कूल में सही पढ़ाया, बच्चे स्टूपिड तो होते हैं नहीं, अक्लमंद बच्चे, दे हैव द मोस्ट शार्पेस्ट लिटिल क्रीचर्स ऑन अर्थ. या उनके सामने बैठ के उनको अगर सलीके से तहम्मुल से कोई चीज पढ़ाई जाए तो उनके दिमाग में रचेगी. बिल्कुल. अगर आप साइड ट्रैक हैं, उनका पढ़ाना ही ना आए आपको, तो घर पे आप 10 उस्ताद आपको रखने पड़ेंगे. यही तो that's what I'm trying to basically say here. The kids now, everybody has to have a tutor, and I don't understand why. It is just unbelievable how our education system is sort of going But- down. Do you believe in home education also? I believe in home education because for the longest time जब कोविड हिट किया था, मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए थे और इनके क्लासरूम्स बनाए गए थे घर के अंदर, और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टीचर्स आया करती थी. एंड आई फेल्ट दैट दे लर्नड अ लॉट at that time. My method of teaching was different. I was teaching them too. Homeschooling एक हद तक ठीक है, लेकिन बच्चों को सोशलाइज करना और इस हाँ. जिंदगी में जीना हर किस्म के इंसान के साथ सिखाना survival बहुत skills जरूरी है. are- Survival बिल्कुल, skills, बिल्कुल. ओके मैडम, कुछ एक्सक्यूज मी वाले सवाल हमारे होते हैं. हम्म, आपने जवाब देना दे दे, नहीं देना ना दे. हम्म. सो ओके राइट. पूछे, आप देखते हैं क्या कहाँ तक कहाँ पहुंचते हैं. अच्छा, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी. कभी नहीं करूंगी. क्या नहीं करूंगी? मुझे आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. क्या नहीं करूंगी? भाई हाँ कि भाई नहीं, दिस इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स, दिस आई वुड नेवर डू. lie, be deceitful, किसी को चकमा देना. जो बात है सही आप बात करें. अगर आप कुछ कर सकते हैं जिंदगी में उनके लिए, किसी के लिए, इंसान के लिए, तो करें. अगर नहीं कर सकते तो फिर उनको धोखा मत दें. बिकॉज आई थिंक दैट ट्रस्ट इज द एसेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप. एंड इफ यू डोंट हैव द ट्रस्ट देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिस्पेक्ट. जवानी में कभी किसी का दिल तोड़ा? ये तो आप बताएं. आपने कहा ना एक्सक्यूज मी, तो ये मैं कह रही हूँ ना एक्सक्यूज मी. अच्छा चल ठीक है, एक्सक्यूज मी. आप उनसे पूछे जिनके दिल टूटे, मुझे क्या पता. जवानी में कभी जान के किसी को नुकसान पहुंचाया? पता नहीं. I don't think so. I don't think so. But you were very ruthless back then, work-wise also. Work-wise, I was ruthless. लेकिन नुकसान कभी वही ना कि I was not a bad-hearted person. I was ruthless because I was wanting to work and my work ethics was really spot on. And anybody who misbehaved or did anything that would negatively affect my work ethics, I was very not nice to them. But नुकसान नहीं पहुंचाया. नुकसान नहीं पहुंचाया. I don't think so. एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. क्या ट्राई करूं? बहुत कुछ तो जिंदगी में कर लिया. क्या ट्राई करूं? कुछ याद Bucket है. list नहीं बनाई. वो स्विमिंग विद द शार्क्स. I don't think so. I like my arms and legs right where they are. नहीं, ऐसा मुझे एक्साइट कि I want to swim with the sharks. I don't want to swim with the sharks. I don't like swimming or the sharks. मुझे claustrophobia होता है. पानी जाग पागल ना बांध दे के आ जावा होते. तस्वीर रखो, मैं उगा लवांगी हूँ. No, but being an adrenaline junkie, एक होता है कि skydiving. Skydiving maybe, but I'm afraid of heights. देखो, I have a lot of quirks, जिसे कहते हैं ना. quirks में है कि मुझे claustrophobia है. और हाँ, मुझे height से नफरत है. And I'm an urban person. I'm not कि मैं नेचर में बैठूंगी और zen होंगी. मुझे spiders के गम से मैं वही पौत हो जाऊँ. So I like the urban life. I like nature from the inside. Like if I'm sitting in a room which doesn't have Wallpaper pin nature का लगा हुआ है. be nice and everything. But I don't know.
The one thing you would want to do skydive. No, I would want to work in a Michelin star restaurant with one of the Michelin star chefs. I would want to do that. One of these very prestigious restaurants. Learn their way, you know, जहाँ पर 6-6, 5-5 महीनों की waiting list या सालों की waiting list होती है. That is something now I would want to do because it's a skill I would want to learn. यही चीज जो मैंने अपनी बेटी से सीखी. Forgiveness. Hmm? Forgiveness. You know, you tend to वही अभी मुझे बताया इसने, you judge people so quickly. Hmm. There are all kinds of people, all in life. हर किस्म के इंसान होते हैं. उनकी अपनी जर्नी होती है, कैसे होते हैं, कुछ सुस्त होते हैं, कुछ मतलब सुस्त का मतलब है कि अपनी पेस पे काम करते हैं, कुछ बहुत तेज काम करते हैं. The beauty of waiting patiently and not judging is so peaceful. It's so wonderful. And I feel कि अगर अल्लाह ताला वो आपको दे देना, आपकी जिंदगी जो है zen. It's beautiful. एक चीज जो मैं अपने बेटे को सिखाना चाहूंगी. यही जो मैंने भी इतना लंबा फलसफा छेड़ा है, यही सिखाना चाहूंगी और क्या. मेरे को ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं दोवां ਨੂੰ अलग-अलग दी. हां. ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ. एक ऐसी आदत मेरे शौहर की जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. Phone. I think this TikTok business has driven everybody nuts, man. Everybody's sitting with the He's phone. on TikTok. He's not on TikTok. He watches TikToks like all of you guys do. But नहीं, I think शोहर की जो आदत में चेंज करनी हो, कोई खास आदत नहीं. He's a very simple, he's a very loving person. And whatever his quirks are, they're his quirks, yeah. He wouldn't be who he is without them. So you accept the good and the bad. That's what a relationship is, I think. No? एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है. मैं बहुत बोलती हूँ. तब नहीं, हमने तो नोट ही नहीं किया. I think it's because I'm thinking very fast. There's a lot going on in my head. So I want everything, I want to speak about it, I guess. Everybody to know what's going on in my head. एक अपना ड्रामा जो मैं रीडू करना चाहूंगी. बहुत सारे ड्रामे हैं. एक तो नहीं है. फिर भी एक यार वो तो मैंने अल्लाह माफ, ये मैं फिर से करना चाहूंगा. यार मैंने एक ड्रामा किया था मोहम्मद राना के साथ, हवा पे रक्स. उसके अंदर I was playing this trapeze artist. I was watching one of the clips back in the days. Oh my god. Sabira Nadeem, myself. There was Abid Ali साहब, उनकी प्रोडक्शन थी. लकी रानी सर्कस में टेंटों में जाके जिंदगियां गुजारी थी. ओहो. एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन बहुत बुरा था. उफ तौबा. एक ऐसा को-स्टार जिसको मैं अवॉइड करती हूँ. जो भी है सच. ओके. अच्छा. एक ऐसा प्ले जिसने मुझे बहुत इफेक्ट किया. दास्तान. In what way? I felt what people थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग of what people must have felt like जो कि displaced हुए थे right before Pakistan was made. Then I started asking stories. Then I started asking stories from my grandmother. मुझे याद है उनके साथ एक दफ़ा बैठी हुई थी. मुझे कह रही थी कि उस तरह ना टेंट्स हुआ करते थे and she volunteered as one of the nurses, she and her sister, to help out. Okay. अच्छे ख़ानदान की जो बेटियां होती थी, they would go and help out as nurses. ये सारे जो बेचारे गरीब लोग थे और the affected people, the affectees you could say, the refugees also. She said कि कॉलरा फैल गया था and उस ज़माने, and she said the dard, the pain of watching those people who have left everything behind, and she started weeping. And that's when I realized कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक मुल्क है. हमने तबाह कर दिया है वो और बात है, लेकिन सर पर एक छत है, चाहे जैसी भी है. And to be a part of something उस ज़माने में when this happened, imagine leaving all your family, your belongings, everything, जो कि अभी फ़लस्तीन में हो रहा है. Exactly that. Imagine that. Imagine living that life. So Dastan, yes, it opened that box. It made me think of being grateful, especially being patriotic. एक तो I am a Fauji's daughter यार. Yeah. मेरे लिए तो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद है, लेकिन इस play के बाद it made me realize that wow, we've really been through a lot. Our ancestors have been through a lot. हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, जो हमें कहानियाँ सुनाते, सिर्फ कहानियाँ नहीं, उनका दुख दर्द है, वो actuality है. How was Haitham? He was nice actually. Yes, he knew what he wanted from me as an actor, and I had no problem
delivering what he asked for because I understood him. अच्छा जी, कुछ पॉइंट्स आपने अपने आप को देने हैं. डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ. 1 out of 10, ठीक है. As a wife. 11. 11. एसली होने बेचारे ने हेड शेफ बनाया. हेड शेफ बनाता है ना, है मुझे मिसाल ची तो नहीं बनाया था. ये तो हर बीवी को जो है ना कि 11. ओ, ये तो आपकी बीवियों की हालत. Jealous you, हाँ. डोंट जेलस. तुमने कभी नोट किया वो जिम नहीं आता? हाँ, वो जिम नहीं आता. उसको शौक नहीं है कि उस वक्त आए जिस पर मैं वहाँ होती हूँ. अच्छा, as a mother. 11. Ooh. No, because I know, because I'm there for my children, no matter what. You are. And I'm very confident about that. As a sister. You should ask my brother that. Oh yeah, painful 6. Hmm. Painful 6. I don't know. I think अभी आप बुलाएंगे ना तो let him answer that question for you. But आप कहते ना हाँ मैं बहन बहुत अच्छी हूँ. नहीं यार, हम लोग बहुत लड़ते हैं और मोहब्बत एक दूसरे के बगैर जी नहीं You सकते. remember one time I think we were in Bangkok. You and Danny were also traveling. We were there. I remember that trip. कोई अल्लाह माफ हमने किसी जगह पे जाना था और हम लोग 10 मिनट से ये ढूंढ रहे थे कि जाना किधर है. And you guys couldn't decide. And I was like यार मैंने कहा ये दोनों पागल हैं. इनका दिमाग खराब है. ये हमारा हमने कहीं जा. तो anyway, हाँ तो बस आपको पता है ना तो painful 6, 7, 8 कर लें जो भी कर लें. Painful 7, 8 as a friend. जान देती हूँ. अच्छा जी. हाँ, and I keep secrets. So you tell me. I'm your friend. मैं तो कोई इस तरह ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੀਟ. मेरी अखियां ने वेखा मुंह नहीं बोलिया. ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. Stop bringing him into this. तौबा इस्तग़फ़ार. अच्छा जी, कुछ डिशेस हैं मैं उनका नाम लूंगा आपने बताना है कि कौन सा सेलिब्रिटी दोस्त आपका या पॉलिटिशियन कुछ भी Okay, मेरे को ये सर्व करेंगी. ठीक है ना. दाल चावल. आपको हाय खट्टे प्याज. हाय 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 भिंडी साथ में कुरकुरे जबरदस्त अचार घर का बना हुआ हरी मिर्च की चटनी जरा है ना. Very nice, कमाल. क्या बात है. कोकोनट सूप. Ehsan Rahim, that's one of his favorite things. यार कमाल कर दिया आपने. आप ये क्या है ये. He loves Tom Yum Goong. I remember that अच्छा? about him. जारी बात इतने थाईलैंड बहुत जाता है. वो एग वाइट एंड ब्रेड. वेरी डाइट हेल्दी फूड. Egg white और bread कौन खाएगा? शान. He's very diet conscious. मुझे याद है कि उसी से सीखा सब अपने टिफिन लेके अब आते हैं. उस जमाने में कोई नहीं वो अपना टिफिन लेके आया करते थे बस उसमें सेब होते थे और उबले हुए अंडे. ये एग ही कुछ कमाल के हैं. क्या एग बनाए हैं आपने. वाह वाह. एग टास्टिक. अच्छा जी. सीजर सैलेड. My mother. अच्छा. Oh, she loves Caesar salad. That's one of her favorite things to eat. आलू गोश्त. आलू गोश्त आलू गोश्त आलू गोश्त आलू गोश्त कौन खाएगा. रेशम. I admire her. I watch her videos, but I know she would go for a good aloo gosht anywhere. ओके. सुशी. सुना आजकल आप बड़ी सुशी बना रही हैं. Sushi कौन खाएगा. सुशी कौन खाएगा. सुशी कौन खाएगा. सब खा लेंगे. नहीं वहाँ से सुशी नहीं खाता. नहीं वहाँ से नहीं सुशी खाता. कौन खा लेगा सुशी. किसको कहूँ. सरमद. खुसट. सरमद सुशट. सरमद खुसट. You know, I have stories. We were shooting till very late in Turkey once. और सब कुछ बंद हो चुका था और जिस होटल में हम ठहरे हुए थे हम चूहों की तरह उसके किचन में गए और हमने रात को खाने पकाए सबने और बैठ के खाए. किचन में. That's what he's also a chef by the way. He cooks really well. हाँ, he does his YouTube Yeah, thing yeah. also. There you go. Yeah. So yeah. और पास्ता. Pasta you could say. He likes his pastas. Barbecue mutton chop. Barbecue mutton chop. Succulent, juicy Well, the mutton chop. people I work with who reminds me of a Mutton mutton chop. chop. Who reminds me of a mutton chop. हमारे सारे जो एक्टर्स हैं वो मटन चॉप. Yeah, बड़े गुड लुकिंग मैन है हमारे पास. मटन द चॉम्प जिनको कहते हैं. The हुमायूं chomp. कहता है ना मटन द चॉम्प. And they're like chomps. Yeah. Chomps. Chomps Elises.
हाँ तो यू वर्क विद सो मेनी गुड लुकिंग मैन यार, कोई तो होगा कि आहा मटन चाप। तो सारे लोगों के साथ मैंने कहा मैं किसका नाम लूं, मैं क्या कहूँ, कौन मटन चॉप। डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना कि औरतों की तारीफें मर्दों के कौन है मतलब क्या मतलब है यार, व्हाट इज दिस? Who I would make a mutton chop for? यस, हैज टू बी अ गुड लुकिंग मैन। I can say Fawad, right? Maybe I make it for him. Maybe I make it for Shehryar. They're two good-looking men. Maybe for Humayun. Maybe for Humayun. He's a mutton chop for sure. चलो हुमायूं सईद मटन द चाप। Chalo. चलो हुमायूं सईद मटन द चाप। Okay. एंड ऑफ कोर्स ओहो हो फलूदा ठंडा, आहा My senior actor. रबड़ी वाला। Rabri wa Faluda. Bushapa. हाय No, and no. And Sakina Appa. Sakina Samu. अरे She's one of my favorite people. For her, for sure. yeah, I think well that's about cover your food exposés. Favorite co-host वैसे कौन था मतलब that you love working with? मेरे co-host कौन, मिकाल रह चुका है। ओ मिकाल के लिए मटन चॉप जिंदाबाद। वो अब याद आया मुझे। देखिए ना दिमाग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो रोस्टी हुआ रोस्टी। एनीवे सो तो हुमायूं के लिए अब हम दे रहे मटन चाप। नहीं मैं अपने मेरे को दूंगी, वो खाएगा मेरा, मैं वो खाएगा मटन चॉप, मैश पोटैटोज। करेले किसको देगा? फैसल को। करेले तो मैं खुद खाऊंगी, लव करनी है। ठीक है जी, हम मिकाल को चले। my favorite co-host, we've hosted, I had fun with you, I remember. You're one of my favorite co-hosts because you've got a lot of spunk. Then Mikal, then Jawad Bashir. क्या कर रहे हैं? बड़ा मजेदार इंसान अरे है। मेरा And Faisal यार, Faisal Qureshi, the one you phone Faisal Qureshi. Yeah, my bud. So these guys are my buddies. So yeah, you could say that. I think you guys should make a you phone की फिल्म अब एक होनी चाहिए। We were thinking. I don't know what happened. और एक फिल्म होनी I don't know what happened. चाहिए। you phone को स्पॉन्सर करनी चाहिए। शो को भी आप कर सकते हैं। And of course, what do you want your legacy to be? How do you want to be remembered? How do I want to be remembered? I was kind and I was a fireball. She had energy like that would light up the world. And then my kindness. I would like to be remembered that she had a heart of gold. Kindness is something that I feel it's an asset for every human being. Because in this day and age, किसी को अपनी बारी दे देनी, किसी के लिए इंतजार करना, किसी को वापस जवाब ना देना, सब्र करना is an act of kindness. And if you live your life respectfully, जिस तरह हज़रत अली का कॉल है, जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो परे हो जाते हैं आपसे, and you float through life. And when you go away in journey into the other world, then people remember you as a human being who is dignified, who's kind. So I want to be that human being. How scared are you nowadays? Of? Especially of your children, how they're going to grow. And ये जो हमारा नया माशरा आ रहा है। Allah tawakkal. Not scared at all. I am going, like you say, you asked me right now, what I rate myself as a mother. I didn't say it out of being pompous that I'm 11. I'm saying that because I have sacrificed everything in my life happily, not because I had to, for my children, so that they would have a better future. Because their iPads are monitored, their TV time is monitored, their game time is monitored. They are supposed to exercise every day, eat healthy every day, go to sleep at 7:30, wake up in the morning. If I wasn't at home doing all of these things, monitoring their lives, they wouldn't be doing all this. दूसरा ये जिनको मैं आज दे रही हूँ ना अपने बच्चों को, ताकि उनका कल संवर जाए, इसलिए. So I'm not scared because मुझे अपने आप पे, मुझे अपने अल्लाह पे सबसे पहले यकीन है. The question was what's your biggest fear when it comes to your children? If I'm gone, they won't be ready to face the world and its bitterness because there's a lot of that's I think that's it. That's it. That's your parental instinct. That's it. And my daughter is a very sensitive topic with me. My daughter is because उसके delayed milestone से जो बच्चे अपनी normal timeline पे बोलना सीखते हैं, उसे बोलना चलना बाद में किया, उसके लिए to grasp a concept takes longer. So मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है when she achieves something because it's like
it's one of the most beautiful things because I wait for it. और वली तो कर ही लेता है, Yeah. पर जहानारा जब करती है तो एक अचीवमेंट फील होती है कि इसने कर लिया. एक सांस आता है, एक मीठा सांस आता है. सो फियर भी ये है कि मैं चलेगी तो who's gonna help her in life, because this world is not meant for Allah's angels anymore. It is too bitter. But I also believe in Allah at the same time. I believe कि अल्लाह ने दिया तो संभालेगा भी वो. Very sure. Baja. Mhm. My friend, it's good to see you after such a long time and to actually sit down and have a conversation with you. I'm We so have glad to you chat. called me. I'm so glad you. I've been wanting to do that for years now. And the thing is, I've known you as a spoiled brat, as a star. I've known you as a loudmouth. And it is so refreshing to see you as a woman. And it's so refreshing to be here and see you so you. Huh? You've always been you. And you know what I love about you? Your calmness. You have that mad side too, which only comes on TV, by the way. Yeah. Split लेकिन personality. नहीं, लेकिन हमेशा मैंने देखा आप you have a lot of sabr, you have a lot of ठहराव. All the work that we've done, you've always sat in the corner quietly, sabr के साथ, without uttering, and you've never been negative about anybody in life. That's what I love about you. But I try to be positive. no, Thank you're you so great. much. You're great. I You're doing great. really appreciate it. And I would love to see you 3 years down the line coming here again, talking more about our kids. उनकी हो रही है. उनकी हो रही है, वो दसो. But yeah, please start working again. We miss you on television. I will start working again. I will start working again. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in and thank you so much जो आप लोग अपने comments वगैरह कर रहे होते, थोड़ा सा कंट्रोल भी किया करें. अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखें. Thank you मेरी जान. Thank you. I love.